Jai Gurudev Joy Mashamo Mahadev Sana Bhavatu. Today we will learn the story of the seven rishis, their most greatest rishi, Bhrigu Rishi, and also we will learn about the story of Lakshmi and Vishnu. आज भृगु ऋषि, सप्त ऋषि, लक्ष्मी और विष्णु की कहानी सुनते हैं. It is from the Puranas which is born out of completeness. There are many lessons hidden in this story. So it so happened that the seven rishis, they decided to find out who amongst the Trinity is the greatest and is worth worshipping. So they decided to vote for it. But when they tried voting, they were not coming to any solution. They were debating. In the end, they decided that one person amongst them will personally go and visit the Trinity and find out that who amongst the Trinity is the best and is worth worshipping. So the best person amongst them was Bhrigu, and Bhrigu Rishi is also known as the father of astrology because he created all the rishis have created the art and science of astrology, but he is the foremost Rishi who created astrology. So before we move ahead, I want to tell you that Bhrigu Rishi is totally connected to astrology. Astrology means Bhrigu Rishi means astrology. They are not different. तो सप्त ऋषियों ने एक दिन तय किया कि हम त्रिदेव में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है और कौन श्रेष्ठ होने के कारण पूजनीय है, इसके बारे में हम आज तय कर ले. उन्होंने चर्चा की, मत दिया अपना अपना, लेकिन कोई भी निवारण पे, कोई भी उत्तर पे वो पहुंच नहीं पाए. फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम में से कोई जाके इन तीनों के पास समक्ष रूप से जाके तय कर ले, उनको देख कर के कौन श्रेष्ठ है. तो इन सातों में सबसे श्रेष्ठ थे तभी भृगु ऋषि. तो तय किया गया कि भृगु ऋषि जाएंगे. आगे हम कहानी को बढ़ाए उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, भृगु ऋषि ज्योतिष विद्या के प्रमुख ऋषि माने जाते हैं. भृगु मतलब ज्योतिषी और ज्योतिषी मतलब भृगु. भृगु और ज्योतिषी को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, जो कि सातों ऋषि ने जो है ज्योतिष विद्या का शोध की है, का एक शास्त्र बनाया है, लेकिन भृगु उसमें सर्वप्रथम थे और सर्वश्रेष्ठ है. इसके लिए भृगु ऋषि को ज्योतिष से खासकर जोड़ा जाता है. तो भृगु ऋषि जो थे, वो भृगु ऋषि को भेजा गया त्रिदेव के पास. भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी अपने पिता परम पिता के पास गए. ब्रह्मा जी के पास गए. ब्रह्मा जी अपने कमलासन से उतर के उनके पैर छूने लगे कि हो भगवान, आप मेरे यहाँ आए, ब्रह्मलोक धन्य हुआ. अब ये कहानी अलग अलग तरीके से सभी शास्त्र में, सभी पुराणों में लिखी गई पौराणिक कथा है, लेकिन जो आपको समझ में आएगी और जिसमें ज्यादा सीख मिलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं. भृगु ने मन में विचार किया कि मेरे पिता होके, सर्जन करता होकर ये मेरे पैर पकड़ रहे, ये बिल्कुल पूजनीय नहीं हो सकते. ये पहली सीख है इस कहानी से जो हमको प्राप्त होती है कि सभी को अगर आप बहुत ज्यादा सम्मान देने लगो, सभी के अगर आप पैर छूने लगो,
तो आपकी लोक गणना, आपकी इज्जत हमेशा कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि पैर छूने वाला और सम्मान देने वाला और सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन बहुत अधिक सम्मान देने से लोग आपको ऐसे ही आपके ज्ञान को आपको पार करने लगते हैं, आपको कुछ समझने नहीं लगता, आपको बिल्कुल बेकार में गिनने लगते हैं। इसी प्रकार से भृगु ऋषि ने भी किया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पिता हो के, साक्षात त्रिदेव हो के मेरे पैर पकड़ रहे, अपने कमलासन से उड़ गए, मुझे सौंप रहे कमलासन, ये पूजनीय नहीं हो सकते। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजी में कहानी बताने के बाद बताता हूं। So Bhrigu decided to first visit his father, who was the creator, Lord Brahma. When he went to visit Lord Brahma, as per the terms, as per the rules, as per the laws, a saint has come. Though the saint is his own child, a saint has come. So Brahmaji comes down from his lotus throne and touches the feet, catches the feet of Bhrigu Rishi and says, "Oh God, you have a right to my Brahmalok. I am so blessed. Come and sit on my throne." When Brahma is giving him so much of respect, Bhrigu takes it for granted. Bhrigu says that he is my own father, he is the creator of this whole creation, and still he is catching my feet. He is not worth worshipping. This is the problem that many knowledgeable people like me have to understand, that when you give respect, you get respect. Respect is a two-way traffic, of course. But when you over-give respect to people, they tend to bypass you. They tend to take you for granted. They tend to insult you. They forget your capabilities, your knowledge, your position, everything. The same thing was done by Bhrigu Rishi. He said that probably this is my father, this is the creator of the universe, but he is not worth worshipping. He is not the best amongst the Trinity. He moved ahead, he went to Lord Shiva. Lord Shiva was in his meditation. And there have always been rumors about Lord Shiva, so he thought that he's intoxicated. He's so intoxicated that he does not even realize that I have come. His eyes are closed and he's in his own world. Now, Shiva does not care what people say about him. Sabse bada log kya sochenge log. The biggest disease is what people think about you. You worry about that. That worry is the biggest disease. So he said that probably this guy is intoxicated. He does not even care that I have come. He is in his own world. He is not worth worship. And he moves out from Kailasha, from the Shivlok. And what happened next, before I tell you that, I will give this in Hindi. इसके बाद शिवलोक गए, कैलाश गए। कैलाश में भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे अपने चिंतन में, ध्यान में। भृगु ऋषि गए, उनको तो पता ही नहीं कि भृगु ऋषि आए, और नाम तो ऐसे ही बहुत बदनाम है भगवान शिव का। भगवान शिव का नाम बदनाम होने की वजह से उन्होंने सोचा कि नशा करके भांग धतूरा इत्यादि बैठे हुए, इनको तो परवाह ही नहीं, जरा भी इज्जत नहीं। मेरे पिता, मेरे साक्षात की पूरे विश्व के जनेता उठकर मुझे अपना आसन सौंपते हैं, इनको तो परवाह ही नहीं, बैठे हैं मस्त अपने नशे में, अपनी ही दुनिया में मस्त है।
ये पूजनीय नहीं हो सकते, वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी सीख आती है, जरा भी चिंता मत करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पर जब चीजें हद के बाहर हो जाए तो ऐसे दुष्टों को डांटने से भी पीछे मत हटना। लेकिन फिर भी ये सप्तऋषि तय नहीं कर सकते कि कौन पूजनीय है कौन पूजनीय नहीं है। ब्रह्मा जी की कहीं पूजा होती है, कहीं नहीं होती है, ब्रह्मा जी की पत्नी की होती है। लक्ष्मी विष्णु की पूजा होती है, लेकिन लक्ष्मी विष्णु के वाहन, लक्ष्मी विष्णु के बच्चे, परिवार, इनकी पूजा नहीं होती है। ऋषि भले कुछ भी तैयार करे, भगवान शिव पूजनीय है, माता पार्वती पूजनीय है, गणपति पूजनीय है, कार्तिकेय पूजनीय है, अयप्पा स्वामी पूजनीय है, भगवान का त्रिशूल पूजनीय है, भगवान का डमरू, भगवान का लिंग, भगवान का वाहन नंदी, माँ दुर्गा का वाहन शेर, कार्तिकेय का वाहन मोर, गणपति का वाहन चूहा, सब पूजनीय है। पूरा शिव परिवार पूजनीय है, चाहे कुछ भी तय करे सप्तऋषि। तो अपनी महिमा ऐसी बनाओ, दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, जो आपके चाहने वाले हैं वो आपके चाहने वाले हमेशा बने रहेंगे। आगे क्या हुआ, निकल के वैकुंठ विष्णु लोक जब भृगु ऋषि गए, ये मैं अंग्रेजी में बताने के बाद बताता हूं। So this is a lesson to be learned by him visiting Lord Shiva, that you must not care about what the world thinks for you, but still when the person who is deliberately giving you a bad name, gossiping about you, creating rumors about you, crosses his or her limits, then it is your duty to protect your fame, pride. If you won't do that, who will do it? It is necessary to call up that person and tell that person to behave, or else the consequences will be really bad for him or her. Lord Shiva does not do it. The rumors keep going, but never you must worry about rumors going around for you. The more famous you are, the more rumors will be seen all over for you, everywhere for you. Don't worry about it. Don't be scared about it. Don't be hyper about it. Don't worry about it. See, Rishi decided that Lord Shiva is not worth worship. He left from there. But in Brahma and Saraswati, Saraswati is only worshipped. In Lakshmi and Vishnu, both are worshipped, but their kids, their weapons, etc. is not worshipped. In Lord Shiva's case, Lord Shiva is worshipped, Mother Parvati is worshipped, Ganpati is worshipped, Kartikeya is worshipped, Ayyappa Swami is worshipped, his vehicle Nandi is worshipped, Mother's vehicle Lion is worshipped, Kartikeya's vehicle Peacock is worshipped, Ganesha's vehicle the rat is worshipped, the snake in Lord Shiva's neck, even that is worshipped, his lingam is worshipped, and his damru is worshipped, his weapon, the trishul, is worshipped. There's nothing which is associated with Lord Shiva and is not worshipped. Everything associated with Lord Shiva is about Kailasha is worshipped. Every single thing associated with Lord Shiva is worshipped, because he is not worried what people say about him. He does not care what people say about him. You have to be like that. And secondly, when the limits are crossed, you must remember to bring that person to the task. So whatever the rishis may decide, Sapta rishis may decide, the fan following of Lord Shiva continues to be. Then Bhrigu Rishi went to the Vankut, Vishnu Lok, and Lord Vishnu was in his Yog Nidra, sleeping on one side, on his right side.
And now Brigu was really upset. He said that enough is enough. All these three are useless. Look at the mindset of a human. Even if he is a rishi, even if he is enlightened, people who respect him, he feels they are not worth worship. People who don't respect him, he feels that person is not worth worshipping. That person is also good for nothing. What does a human mind want? It is absolutely unpredictable. It is absolutely, haywire. So, in the end, he went to Vaikunth and Lord Vishnu was in his yoga nidra meditating, lying down and meditating. He said, how can someone lie down and meditate? And how dare he does not acknowledge my presence, my coming. And he goes and kicks the chest of Lord Vishnu. So you must balance yourself. Give respect as much it has to be given. Ignore as much the person needs to be ignored. Every person is different. They require different treatment. You must understand this in life. Now this guy went and kicked him on the chest of Lord Vishnu. And in the heart of a man lives his consort, his wife. And that kick went and hit the stomach of goddess Lakshmi, the goddess of wealth. Lord Vishnu immediately got up and he started massaging the feet of Brigu. He said that on my chest, which is like hard as stone, your soft legs accidentally have fallen. You may have got hurt. And Brigu was pleased. Brahma gave too much of respect. Shiva ignored him completely. Vishnu balanced it. Ignored him in the beginning and then gave him respect. This is how a clever man must be. And Brigu decided that yes, Vishnu is the best amongst them three and he has to be worshipped. But the story doesn't end over there. Remember, goddess Lakshmi got a kick on her stomach and she was very upset. What happened? What did she do? That we will know after I say the same thing in Hindi. शिव से भी नाराज होकर वैकुंठ लोक गए. वैकुंठ लोक में देखा योग निद्रा में भगवान विष्णु लेटे हुए थे. चिढ़ गए, ये तीनों ही ऐसे है. भगवान ब्रह्मा ने उनको आदर सम्मान दिया, वो उनको हजम नहीं हुआ. भगवान शिव ने देख लिया अपने ज्ञान नेत्र से, ज्ञान चक्षु से कि इनको इज्जत हजम नहीं होती है. तो भगवान शिव ने उनको धुतकारा. आंखें बंद करके बैठे रहे. तुझे आना है तो आ, जाना है तो जा, तुझे सर्वश्रेष्ठ कहना है तो कह, नहीं कहना है, बुरा कहना है तो बुरा कह, भाग. पूरी तरह से उनको इग्नोर किया, पूरी तरह से उनको जैसे उनका अस्तित्व है नहीं है कि बराबर करके उनको भेज दिया. भगवान विष्णु ने भी अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया ब्रह्मा जी के साथ क्या हुआ, भगवान शिव के साथ क्या हुआ. भगवान विष्णु ने पहले आए तभी लेटे रहे, उनको पूरा ध्यान नहीं दिया, पूरा अपना योग निद्रा में मगन थे, देख रहे थे क्या क्या हो रहा है भृगु ऋषि के साथ, त्रिदेवों के साथ. और भृगु ने कहा कि यहाँ पे भी ऐसा. जाके लात मार दी भगवान विष्णु की छाती पर. भगवान विष्णु तुरंत चौंक के खड़े हुए और कहा, मेरे पत्थर जैसी छाती पे आपके कोमल कमल जैसे पैर पड़ गए, आपको दर्द हुआ होगा. उनके पैरों को दबाने लगे, मालिश करने लगे. भृगु प्रसन्न हुए और भृगु ने यह तय किया कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान विष्णु ही है.
दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा उन पे अगर आप ध्यान ना दो तो भी वो व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाता है, और बहुत ज्यादा अगर किसी को इज्जत दो तो भी वो आपके खिलाफ हो जाता है, वो आपको कुछ नहीं समझता। लेकिन भगवान विष्णु ने पूरी तरह से उनको धुतकारा नहीं जैसे भगवान शिव ने धुतकारा था, और उतना सम्मान दिया नहीं जितना भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था। उन्होंने पहले वो आए तो उनको नजरअंदाज किया, धुतकारा, और फिर उसके बाद में उनको इज्जत दी। जब ये समभाव हमारे जीवन में आता है ना, तब हम सर्वश्रेष्ठ बनते हैं भगवान विष्णु की तरह। तो उसी प्रकार से देखो, पहले जैसे कबीर जी कहते हैं, पहले एक शिष्य को थाप देता है गुरु अंदर से, फिर ऊपर से सहलाता है, फिर अंदर से थाप देता है, फिर सहलाता है। वैसे एक पहले थप्पड़ मारो, फिर सहलाओ, फिर थप्पड़ मारो, फिर सहलाओ, फिर थप्पड़ मारो, फिर सहलाओ। ये ऐसे करने से दुनिया आपके साथ ठीक चलेगी, वरना ठीक नहीं चलेगी। एक मनुष्य के हृदय में उसका प्रियतम रहता है, भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी रहती है। माता लक्ष्मी के पेट पे लात पड़ गई भृगु की। भगवान विष्णु को तो सप्त ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मान लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। लक्ष्मी के पेट पे लात पड़ी और माता लक्ष्मी को क्रोध आया। माता लक्ष्मी ने शाप दे दिया कि हे भृगु, तूने मेरे पेट पे लात मारी है ना, मैं तेरी पूरी कौम के पेट पे लात मारूंगी। तब से लेके आज तक ज्योतिष विद्या श्रापित विद्या हो गई। सारे ज्योतिष भिक्षा मांग के खाते हैं, उनके पास पैसों की हमेशा कमी रहती है, माता लक्ष्मी के श्राप के कारण। माता लक्ष्मी के क्रोध के कारण, माता लक्ष्मी के प्रतिशोध के कारण। लेकिन भृगु ने भी उसका रास्ता निकाला। माता कमला के रूप में, जो स्थिर लक्ष्मी मानी जाती है, तांत्रिक लक्ष्मी मानी जाती है, माता का उन्होंने सबसे पहले अनुष्ठान सिद्धि मंत्र प्रयोग किया। इसीलिए माता कमला के जो ऋषि है वो है भृगु ऋषि, और माता धूमावती जो उनकी बड़ी बहन है, ज्येष्ठा, गरीबी, दरिद्रता मानी जाती है, उनके भी ऋषि भृगु ऋषि है। तो भृगु ऋषि ने पहले तो विष्णु को लात मार के दरिद्रता को अपनी तरफ कर लिया, और फिर लक्ष्मी माँ की पूजा करके माता लक्ष्मी को अपनी ओर कर लिया। यदि आप ज्योतिष विद्या में हैं, कोई भी तरीके से भविष्यवाणी बताते हैं, तो आप इस गरीबी से बच सकते हैं। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, अंग्रेजी में बता लेने दो। भृगु kicked the stomach of Lakshmi accidentally. Lakshmi was very angry. Lakshmi cursed Bhrigu that you have kicked on my stomach, I will kick on the stomach of everyone in your lineage. And from that very day, the Brahmins and the fortune tellers, the astrologers, they live like beggars. They always have financial crunch. But Bhrigu came out of it, and I'm also going to tell you how astrologers and fortune tellers and Brahmins can come out of it. Bhrigu worshipped Mother Lakshmi in form of Mother Kamla, who is stable Lakshmi. And so when you do the sadhana of Mother Kamla, you see that the Rishi of Mother Kamla means the seer, the one who first experimented with her mantras after getting it from Lord Shiva, is Bhrigu Rishi. And at the same time, the Rishi of Mother Dhumavati, the elder sister of Mother Lakshmi, Jeshta, and or poverty, Daridrata, is also Bhrigu Rishi. So by kicking Lakshmi, he became the Rishi. He energized the mantra of Daridrata, of poverty. But then after that, by worshipping Mother Kamla, he became the Rishi of Kamla also, and he got out of his
poverty curse. In the same way, if an astrologer wants to get rid of his poverty situation, he needs to first is worship Mother Kamala or Padmavati, Sthira Lakshmi, more of Mother Kamala, and get rid of his poverty. And secondly, this is very important, he must never kick Lakshmi. How do you kick Lakshmi? How can you kick Lakshmi? By not charging your clients. However, your client may be poor, however, your client may be related to you, however, you may be loving the person, the native whose astrology you are seeing, you must charge that person. You must charge minimum at least 1 rupee. If you don't charge, means you are kicking the stomach of Mother Lakshmi, and return she will kick you. You are kicking the wealth which is coming to you. You are throwing off the wealth which is coming to you. By not charging, that wealth will kick you for sure. It will get even to you. So, an astrologer has to remember that never do any predictions for free. So many lessons to be learned from this one story. Okay, now we'll tell this in Hindi. माँ लक्ष्मी के शाप से मुक्त होने के लिए सबसे पहले तो कमला की साधना करनी चाहिए। हर व्यक्ति जो भविष्य कथन का काम करते हैं, उन सभी को माँ कमला, माँ पद्मावती, ज्यादातर माँ कमला की साधना करनी चाहिए और अपने आप को, अपने परिवार को दरिद्रता से बचाना चाहिए। दूसरा कि एक बहुत ही खास बात मैं कहना चाहता हूं, इसको ध्यानपूर्वक सुने। कभी भी मुफ्त में किसी की भी ज्योतिषी ना देके, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप मुफ्त में ज्योतिषी देखते हैं तो आप उस पैसे को ठुकराते हैं जो सामने वाला आपको देने वाला है। उस पैसे को आप लात मारते हैं, आप लक्ष्मी को लात मारते हैं, उस पैसे को ठुकराते हैं। वो पैसा, वो लक्ष्मी आपको अवश्य भविष्य में ठुकराएगी। कभी भी बिना पैसे लिए, बिना दक्षिणा लिए कभी भी किसी की ज्योतिषी करो मत। चाहे 1 रुपया लो, भले ही आपका जातक कितना ही गरीब हो, आपसे कितना ही उसका रिश्तेदार हो, आपके साथ उसका कितना ही रिश्ता बना हुआ हो, भले ही ये जातक जो है कितना ही आपको प्रिय हो, कम से कम दक्षिणा लेकर ही आप भविष्यवाणी करें। नहीं करेंगे तो आप लक्ष्मी के पेट पे लात मार रहे हैं, लक्ष्मी को ठुकरा रहे हैं, लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। लक्ष्मी आपको छोड़ेंगे नहीं, मां लक्ष्मी आपके पेट पे भी लात मारेंगे, ये याद रखना। तो कमला माँ के पाठ्यक्रम में आप सभी को हम मिलेंगे। हरिओम तत्सत। We will see you all in the course of Mother Kamala. Hari Om Tat Sat.